Kind of sound coming from your place. I don't know what it is. Just a moment. Please, you please take care of that. So we'll be starting now, okay? Good morning and welcome to today's session on entrepreneurial journey, social challenges as opportunity. As you know, the NCID is organizing a weekly 1 hour Facebook Live and YouTube Live session on innovation, entrepreneurship, and startup for IGNOU students and faculty, covering different aspects of innovation, entrepreneurship, and startup. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 31st session in the series, titled Entrepreneurial Journey, Social Challenges and Opportunity, is being organized today. To deliberate on this interesting topic, we have with us our resource person, Mr. Chandan Kumar. Mr. Chandan Kumar is the founder director of the startup named Craft Your Career Educations Private Limited, a center of counseling and training. He holds a degree in BSc Physical Science from Sri Aurobindo College, Delhi University, and in MA in Psychology with specialization in counseling psychology from Indira Gandhi National Open University. He is pursuing PhD in psychology. Mr. Chandan has more than 8 years of experience in the field of career counseling, career assessment, psychometric testing, career workshops, and trainings. He has counseled more than 5,000 students via workshops, individual career counseling, and psychometric testing, and already trained more than 250 counseling and training professionals. Further, he has been conducting workshops, psychometric testing in various schools and colleges. He has been a member board of studies of educational institutions and member of other organizations. Mr. Chandan Kumar is a winner of many awards. Recently, his startup, Craft Your Career Educations Private Limited, was recognized as Innovative Startup of India 2021 by Winners Creator. I welcome you, Chandan, to today's session. Before I invite you to give your talk, I would request Dr. O.P. Sharma, Director NCID, to say a few words, please. Dr. Sharma. Thank you, Dr. Momita, and good morning to all, and particularly to Mr. Chandan. I welcome you. And as you know, the purpose of this series is to motivate and inspire our students towards innovation, entrepreneurship, and startup. And nothing can be better than today's program when a IGNOU student itself, a successful startup, is motivating and inspiring by his own journey. So I think it should be a very good lecture for all the fellow students of IGNOU who may be inspired by Chandan's journey, how he started his entrepreneurial journey, what kind of challenges he faced, and in fact, how he converted those challenges into opportunity. That is the thing to learn from him. And I know him that he has been very active entrepreneur, doing every time very new things. I have been following up on LinkedIn and other social media also. I see every day he is doing something new. This is certainly, Mr. Chandan, a matter of pride for all of us, all IGNOU faculty and fraternity, that IGNOU students are doing so wonderful, and then you are paving the way for others also that they can do the similar kind of things in their field, provided they have interest in doing something. And I know what kind of problems were being faced by you and your startup, and how you have converted those all challenges, problems into opportunity, and then made it very successful kind of thing. Many people are coming to join your that company to take benefit of that. So these all things I think will be very motivating and inspiring for all of us. So we are really thankful to you, and then keep on motivating our students by way of your everyday that whatever you are doing in this direction.
So, welcome you again and welcome all the participants. So, we can now start, Dr. Momita, today's session. Thank you, Dr. Sharma. Now I would invite Mr. Chandan to present his talk. Mr. Chandan. Well, thank you so much, Momita ma'am, OP sir, and of course NCID team. Like you all engaged so well throughout the session to motivate your students, to motivate budding entrepreneurs as well, and really you guys are really inspiration for many people like me. And it's my pleasure, like to whom I always like I regard, to whom I inspired from you guys. And today I am in front of you to speak something, so this is really pleasure for me. And this is proud moment for me as well. And of course, being an entrepreneur, lots of challenges came during these 2 years and 3 years. Like we are living into a particular country. हम जिस country में रहते हैं, this is service prone country, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो सर्विसेज पे करते हैं कि आप अपने लाइफ सिक्योर्ड पहले कीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा. दिस इज द काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग इन टू. And there is a nothing different story with me also. Same thing happened. And we like I gone through a same kind of phases, same kind of challenges, but those challenges never stopped me. And what happened, even मैंने अभी अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी में या फिर अपने एकेडमिक टाइम में, अपने जॉब के टाइम में, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, like they have lots of thought process, they have lots of innovative ideas, but वो केवल माइंड में ही रह जाता है, वो केवल माइंड में ही दम तोड़ देता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. they they do keep planning कि अब होगा अब होगा अब होगा, और होते होते वो कभी नहीं होता है. And this is what the main reason behind India, कि we are lacking behind startups, and we are lacking behind or we are lacking behind developing good entrepreneurs. This is what the reason, because of we are living into service prone country, जहाँ सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप अपना लाइफ सिक्योर्ड करो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या फिर वॉट एवर यू शुड सिक्योर योर जॉब्स, अपने लाइफ को सिक्योर करो. एंड वी continuously focused on family building, we continuously focused on family securities and all. सपोर्ट सिस्टम बहुत कम होता है. एंड ऑफ कोर्स यदि आप कुछ करने की यदि जिद आपके अंदर है, तो यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. बहुत सारे रियल टाइम चैलेंजेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करते हैं, and still we don't have an answer for those situations, those challenges. Then why not we should start something to counter those challenges and issues. This is what the entrepreneurship, this is what something you should start for your own self. यहीं से हम लोग, यहीं से कोई भी स्टार्ट करता है. मार्केट में आज के टाइम में हर एक चीज का, हर एक प्रोसेस का, हर एक डोमेन का, हर एक फील्ड में बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं. बट व्हाट यू आर गिविंग डिफरेंटली, what you are giving differently to this particular market with your own thought process, with your own process to think different. सिंपल सा एग्जाम्पल है, मार्केट में फिलिप्स भी था, एलजी भी थी, सैमसंग भी थी, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में थे. बट सडनली मार्केट में एक इंडियन एंटरप्रेन्योर आया बोट को लेके, एंड उसने मार्केट में पूरा ऐसा तहलका मचाया कि नाउ डेज बोट इज अ बिग ब्रांड इन देयर ओन डोमेन, इंस्टेड ऑफ बिग प्लेयर्स already into this particular market. Why? Because he pinpoint a particular thing, he innovated many things in his product. और आज के टाइम में बोट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट कंपनी in their own domain, in their own industry, in their own field. So
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम पहले ये सोच लें कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मार्केट में मैं सक्सेस करूं, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी कंपनी रन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये सारे जो थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में सबसे पहले आते हैं, दीज आर द एक्चुअल बैरियर फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, एनी पर्टिकुलर स्टार्टअप, एनी पर्टिकुलर डिसीजन. So that's the reason I opted this particular topic, social challenges, as an opportunity. So, and of course my organization is also related to social work as well, social, and it is related to social work, education, counseling, and various other things. So of course we have gone through lots of social challenges in my phase as well, and I must say, like, none of other individual, हम सब उस फेज से कहीं ना कहीं गुजरे हैं, और वो उस चैलेंजेस को हमने फेस किया है. जब हम बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे, लाइक, वी हैव टू फुलफिल पेरेंट्स ड्रीम कि आपको कौन सा करियर चूज करना है. उसके थ्रू आपको बहुत सारे उस चक्कर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने होते हैं. एंड देन समटाइम्स हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, देन फिर जॉब में जाते हैं, देन वी फील कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर वी आर फीलिंग इनटू. एंड trust me, I counseled more than 5,000 students and professionals till today. Among them, 60 to 70% students and professionals, those are graduate or in graduation and above. Why? Because the kind of societal structure we have, the kind of societal structure we have, कि they are not opting their own, they are not opting their subject, their field of interest through their own choice, through with the help of their own interest, personality and aptitudes, likewise नहीं करते हैं. देन अनदर थिंग इज दैट कि हम लोग जब आगे प्रोसेस करते हैं, देन फिर हम लोग उस हीट को फील करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सक्सीड इन माई लाइफ. तो जब ये सारे प्रोसेस हमने जब ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फील होते हैं, जब ये सारे हमें दिक्कतें महसूस होते हैं, देन वी रियलाइज कि व्हाट आई डिड रॉन्ग इन माई पास्ट लाइफ, in my past time. So my organization is related to that only, because when I was student, when I entered into professional life, I was very less knowledgeable in this particular regards कि how I will survive in professional setup. मैं प्रोफेशनल सेटअप में सर्वाइव कैसे करूंगा. जब मैं उससे छोटा था, when I was in academics, so I was not very much clear about कि how should I proceed with my career, what subject should I choose, how what all options are available in this particular market. And recent surveys also says, even in, like, my academics already completed 15 year ago, but still current recent surveys I usually see, read and all, like, still in India 90% parents and students are aware of only 7 career options, instead of we have 1,000 plus or 10,000 plus courses and domains are available in market. Why? Because we don't have such kind of resources to upgrade them. We don't have such kind of professional structure in this particular thing. And also, even lots of surveys also says कि एवरी ईयर जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से या मास्टर से पास्ड आउट होते हैं, अमंग देम 6 to 7% students and professionals are skilled with their own domain, skilled with their professional etiquettes. So these are some points that always hit me कि why should not start something new regarding something different in this particular domain. हम क्यों नहीं इस चीज को स्टार्ट करें. लेकिन अब जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, सो एज आई ऑलरेडी मेंशन इन अर्लियर टाइम एज वेल कि वी आर लिविंग इनटू सर्विस प्रॉन कंट्री. जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला थॉट, सबसे पहला बैरियर जो हमारे माइंड में आता है ना, कि फैमिली सपोर्ट करेगी, समाज क्या कहेगा. दिस इज व्हाट द वेरी फर्स्ट thought process came in
एवरीवन्स माइंड। या फिर कोई भी आप काम करोगे, चाहे कल मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है, कल मुझे कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, कल मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, हम अपने माइंडसेट से कुछ नहीं सोचते। हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि व्हाट अदर्स सेज, दूसरा क्या कहेगा। या फिर कभी, या फिर लाइक आई रेगुलरली oftenly I discuss with so many of my friends, colleagues, juniors, seniors, बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि मुझे नहीं किसी और को दिखाना है। why you want to prove someone else, why, what to do, what society will do for you, आपको करना है। you have to do yourself। पहले आप उस चीज, उस ऑरा से बाहर निकलिए। इवन इफ यू टॉक फॉर टॉक टू मी, लाइक आई एम ऑल्सो अ काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे लाइक माई फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट and he is not, he don't have a knowledge regarding anything related to entrepreneurship, startup, क्या है क्या नहीं है, nothing। whenever I talk with him, सिक्योरिटी की बात होती है, लाइफ सिक्योरिटी की बात होती है, सैलरी कितनी है, these are the things only I he used to discuss with me। so a small story I just wanted to share that happened with my father। like I thought of ki I should have my own startup. I should have, and it is like almost 6 year back story I'm talking about. My organization registered with Government of India in 2020 only, but this is the story when I like my mind completely in mood. I was completely in mood कि मुझे अपना startup start करना है। so that time I like worked on background building and all, क्योंकि see for every business, किसी भी business को start करने के लिए आपको background से, not through funding but through knowledge, आपको market research, आपका बहुत सारा जो pros and cons है, आपको वो सारी चीजों को देख के background building आपका पूरा strong होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं base building। आप बेस पे काम करते हो, तो उस टाइम पे आई थॉट ऑफ कि कुछ करना है, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बेस बिल्डिंग, कि हमारा एक बेस बने। सो दैट टाइम आई क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर माय ओन थॉट प्रोसेस। उस टाइम पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंपनी थी, उस टाइम पे मैं ये कहूंगा कि मैं अपने कॉन्सेप्ट को, मैं अपने थॉट प्रोसेस को वेबसाइट के टर्म में मैं डेवलप कर चुका था। सो आई सेट with my father that day, like one day I went my home, so I sat together with my father and उनको पूरा वेबसाइट दिखाया कि पापा ये है, ये है, ये है, ये है, दिस है, दैट है। he listened everything and then at last point सब कुछ उन्होंने 10 मिनट तक, 15 मिनट तक जितनी बातें मैंने बोली, विदाउट एनी क्वेश्चन ही लिसनड एवरीथिंग एंड देन एट द लास्ट पॉइंट ही मेंशन, बेटा ये बताओ ये किस कंपनी से एफिलिएटेड है, एसोसिएट है, आप किसके लिए काम करोगे और सैलरी कितनी मिलेगी। देन आई रियलाइज कि ये चीजें इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली है। so that time definitely I was working somewhere else, so then I gave him an idea कि नहीं पापा, I am working there only and all। so now when I entered full fledged into our business, then he realized कि चलो वो अपना business कर रहा है, but still I'm not sure कि he is very much aware of कि मैं actually मैं कर क्या रहा हूँ। so the thing is that, so this was my biggest challenge कि मैं समाज को इग्नोर कर सकता हूं, बट फैमिली को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू कांट इग्नोर योर फैमिली, बट यस, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको कुछ स्टेप्स, कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं जो समटाइम्स कुछ लोगों के अगेंस्ट भी जाता है, एंड दैट यू हैव टू टेक इट। बट उसके लिए बीइंग अ एंटरप्रेन्योर यू मस्ट हैव दोज दोज स्किल्स, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीजें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। when I was young, like still I am young, but when I was student actually, that time we don't have very much resources to guide you।
आज हमारे पास लाइक द टीम लाइक एनसीआईडीई, दे आर डूइंग वेरी वेल. इवन लाइक आई एम ऑल्सो फंक्शनिंग फॉर डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल, इवन गिविंग अ गाइडेंस. बट हमारे टाइम में ना उतना करियर काउंसलिंग होता था, ना उस टाइम पे हमें पता था कि करियर काउंसलिंग नाम की भी कोई एक चीज होती है या फिर कोई डोमेन होता है जो कि आपको गाइड कर सके. सो दैट टाइम यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट नाउ डेज वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, बट स्टिल आई फाउंड कि उन रिसोर्सेज का यूज नहीं हो पाता है. क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव अ गर्ड्स टू टेक अ डिसीजन. एंड दैट्स द रीजन. अभी आज सुबह मैं एक लाइक कुछ वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ कंटेंट देख रहा था. देन आई फाउंड surprisingly, earlier it was definitely data grown very beautifully, but not at par. Just so today morning I have gone through the data of global entrepreneurship monitor India. Like India is still having only 5% of businessmen entrepreneurs. 5%, total population का 5%, and 95% people are feeded by those 5%. You can say likewise. और उस 95 में सैलरीड भी आ गए, लाइक अनएम्प्लॉयड भी आ गए, सेमी एम्प्लॉयड भी आ गए. ओनली 5% एंटरप्रेन्योर्स आर देयर. एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इन वर्ल्ड, और वो जो 5% है इन वर्ल्ड, दैट इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल परसेंटेज. बाकी अदर कंट्रीज की का कंपैरिजन करें तो वो 5% बहुत कम है. ब्राजील 17% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दे प्रोड्यूस एवरी ईयर. 5% is one of the lowest category, I can say. And another very important data is highest discontinuation rate. That is also India. That is also in India only. Highest discontinuation rate. मतलब highest discontinuation in terms of startup I am talking about. हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस होता है विदाउट हैविंग एनी प्लानिंग, विदाउट हैविंग एनी थॉट प्रोसेस हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट देन वी फील चैलेंजेस इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, बट वी डोंट. फिर वहां पे बहुत सारे अदर चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है. एंड दैट परसेंट इज 26.4%, वन ऑफ द हाइएस्ट इन वर्ल्ड. एंड सरप्राइजिंगली उसका जो एक बाइफर्केशंस हैं कि डिसकंटिन्यूएशन रेशियो में रीजंस क्या क्या हैं, जिसमें सबसे जो लार्ज स्केल पे है, जो सबसे हैवी परसेंटेज है, दैट इज लैक ऑफ प्रॉफिट. लैक ऑफ प्रॉफिट मतलब यानी कि आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होके उस चीज को प्लान नहीं किया. दैट्स द रीजन आपका प्रॉफिट मेजरमेंट नहीं है. क्योंकि प्रॉफिट आपका कब आएगा? प्रॉफिट तब आता है जब आप प्रॉपरली मार्केट रिसर्च करके, एंड ऑफ कोर्स continuous innovation is very important. क्योंकि the society we are living into, that is completely dynamic nowadays. आप 5 ईयर पहले के सोसाइटल स्ट्रक्चर को आप आज के सोसाइटल स्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. नीड, डिमांड is continuously changing day by day, year by year, decade by decade. So you can't continuously work on same same mode of operation. same एक हमारे पास बहुत लाइव एग्जांपल भी है. नोकिया, एक टाइम पे नोकिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल कंपनी, बट वो उसके बाद एंड्रॉयड आया, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, बट नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया. और क्या हुआ? नोकिया मार्केट से ही आउट हो गया, एंड मेनी न्यू प्लेयर्स केम इनटू द मार्केट. सो यू नीड टू इनोवेट योर प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस. एंड जब तक आप मार्केट डिमांड को नहीं समझोगे, मार्केट रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट के नॉलेज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हो. आप जब प्लानिंग ही नहीं होगा तो प्रॉफिट, बिजनेस रन ही नहीं हो पाएगा. जब बिजनेस रन नहीं हो पाएगा तो प्रॉफिट की बात ही हम कब क्यों करेंगे? क्योंकि बिजनेस ही हमारा रन नहीं कर पाए. So 16.9% due to lack of profit and 7% due to financial crisis. Financial crisis, see lots of startup. एक ये भी मिथ है हमारे माइंड में कि स्टार्टअप रन करने के लिए we need a heavy amount.
This is also a kind of myth. There are n number of business, there are n number of concept that don't require heavy amount, heavy funding. और आज के टाइम में वी हैव lots of platforms also. Even Startup India is there. Even recently launched Shark Tank India. Even many other, even like team like NCID, they like we are like I'm also part of their mentorship program. So even we as a team are working so hard to give a guidance to students and professionals for coping up the real challenges. एंड आप उसमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दो उसके बाद आप फंडिंग देखो कि क्या है क्या नहीं. नो, यू कैन डेवलप योर प्रोटोटाइप ऑल्सो. आप प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं, आप उसकी स्केलेबिलिटी देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे स्केल करेगा. उसके प्रोटोटाइप से आप एक इमेजिनेशन डाल सकते हैं, अपना एक प्रोटोटाइप आप इन्वेस्टर्स के आगे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. अभी National Startup of India, they do conduct every year National Startup Award. आप being a organization, being a prototype, आप एक small organization आप run कर रहे हैं, वहाँ पे आप registration process करके आप you can apply there. वहाँ पे बहुत सारे network आपके create होंगे. It's all about कि how you are doing networking. सो इट्स नॉट लाइक कि उसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है. एक मिनिमम अमाउंट, जब तक आप प्रोटोटाइप, जब तक आप मार्केट टेस्ट कर रहे हो, मार्केट टेस्ट के लिए जो इनिशियल अमाउंट्स हैं डिपेंड करता है हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड. हर एक इंडस्ट्री का अपना अलग अलग एक मिनिमम रिक्वायर्ड बजट होता है जो कि आप लगाना पड़ेगा, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेवलप अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप. आप प्रॉपर बिजनेस प्लान बना के यू कैन गेट लॉट्स ऑफ फंडिंग फ्रॉम various other investors and various other people those are interested into. So it's not like कि आपको स्टार्ट करने के लिए करोड़ 2 करोड़ या 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपको फंडिंग चाहिए ही चाहिए. नाउ अनदर थिंग इज ऑल्सो दैट फ्रेंचाइज बिजनेस आर ऑल्सो ग्रोइंग डे बाय डे. फ्रेंचाइज बिजनेस क्या होता है? फ्रेंचाइज बिजनेस इज लाइक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करके, आप एसोसिएट करके आप उसके ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. उसमें तो आपके इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होते हैं, उसमें फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें. एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलवेज हायर देन एनी न्यू हायर देन टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर. सो चॉइस इज ऑल योर्स कि हाउ यू वांटेड टू स्केल योरसेल्फ, हाउ यू वांटेड टू create your own brand, or how you wanted to create any franchise business, how you wanted to go with any franchise business. It's all about your choice. But ये सब तो हम बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप डू यू रेडी विथ इट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू स्टिल बॉदरिंग ऑफ अदर्स? आर यू स्टिल बॉदरिंग कि दूसरे का थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या कह रहा है उस बिजनेस के बारे में, क्या वो उसके लिए, क्या वो उस जो भी वट एवर आई वॉन्टेड टू स्टार्ट, क्या वो उस चीज के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा, इंकरेज करेगा? दिस इज सी दीज आर द थिंग्स आर वेरी सिली थिंग. इफ यू वॉन्टेड टू डू समथिंग यू हैव टू डू. आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा. सो थोड़ा सा एक आइडिया लाइक बीइंग एंटरप्रेन्योर. हम लोग ये सब चीजें हमेशा जानते रहते हैं कि बीइंग एंटरप्रेन्योर ये स्किल्स होना चाहिए, वो स्किल्स होना चाहिए. सो लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग यू सम ऑफ माय स्टोरी ड्यूरिंग माय स्टार्टअप जर्नी. जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, क्या क्या चैलेंजेस हमारे लाइक आई फेस्ड, एंड thoroughly I will give you a time to time like skill set also ki what skill set you must have. See, professionally, like I started my career with management guy. So like when I started a job in one of the like I started my job in banking sector initially. But एक इंडिविजुअल का अपना गोल होता है, थॉट प्रोसेस होता है, एंड आई एम अ काइंड ऑफ इंडिविजुअल that love to learn new things. I always, since my childhood, मैं हमेशा से ही लाइक एक होता है कि बच्चे का दिमाग दौड़ते रहता है इधर उधर, चीज़ों को समझना, चीज़ों को जानना, नई चीज़ों को टेस्ट करना, नई चीज़ों को समझना. सो आई वॉज इन कंटिन्यूअस थ्रू आउट माई लाइफ.
So when I started my job in banking sector, I thought कि यार प्रोसेस बहुत एक ही चीज है, आप एक ही चीज प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो. So I quit that particular industry and entered into this education sector. So when I started job with lots of education companies and all, I realized कि when I was student and modern day students, कहानी बहुत ज़्यादा differ नहीं है. Still हम लोग के टाइम में भी अपॉर्चुनिटीज कम थी, अवेयरनेस कम था, और आज भी अवेयरनेस कम है. फाइन. आई स्टार्टेड, आई थॉट कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू दैट ओनली, अंटिल अनलेस दिस इज वेरी एग्जिस्टिंग आइडियाज. ये आइडियाज बहुत एग्जिस्टिंग थे और बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी वर्क कर रहे थे इस इंडस्ट्री में, एंड गुड फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑलरेडी. बट स्टिल आई थॉट कि चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, देन वी विल चेक कि करना क्या है. सो जो सबसे पहला चैलेंज था, हाउ टू स्टार्ट, क्योंकि दैट टाइम कोई था नहीं गाइड करने वाला कि करना कैसे है. देन आई डिड लिटिल बिट गूगल्स एंड ऑल. तो आई गॉट टू आइडिया कि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो हमें स्टार्ट करना होता है, टू क्रिएट, टू डेवलप अ काइंड ऑफ वेबसाइट, जिससे आप जिससे आप ये कर सकते हो कि आप अपनी अपनी प्रेजेंस मार्केट को दिखा सकते हो. एक नॉर्मल सा एक कोट है, जो दिखता है वही बिकता है. दैट्स द रीजन बिग बिग ब्रांड्स आर प्रमोटिंग एट वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. So I started developing websites through connection with other people, through consultants, website developers and all. Now here, being entrepreneur, it's not like कि आपको हर चीज में एक्सपर्टीज होना है, बट यू मस्ट हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दीज थिंग्स. सो फर्स्ट चैलेंज मेरे साथ ये था कि वेबसाइट डेवलपिंग तो कर रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि आई वॉज नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड. But so in that particular thing, I lost so much amount in that particular domain. Then I realized ki, see, I can't be too much dependent on those developers. So this is first skill that each and every entrepreneur must possess, must be aware of at least basic things those are needed in your business. आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि आपको करना क्या क्या है, और एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि किस तरीके से करना है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं. और ये कंटिन्यूअस लर्निंग, और ये ऐसा नहीं है कि आप जब स्टैब्लिश कर रहे हो उसी टाइम पे आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी. इट विल बी यूजफुल इन थ्रू आउट ऑफ योर सक्सेसफुल रन ऑफ योर बिजनेस. ये आपको जब तक बिजनेस आप रन कर रहे हो, लाइफ टाइम कर रहे हो, आपको लाइफ टाइम इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि कल के डेट में मुझे वेबसाइट में कुछ सीखना था, कल के डेट में मुझे उस चीज, आज मैं किसी और चीज को सीख रहा हूं क्योंकि वो मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है. And this is very important for every individual to learn. Then only you will be able to do well in this particular market. So that was my first challenge, and I overcome with that after definitely having some losses and all. But anyway, we like I proceeded further. Then during some another thing that is very important for any startup, networking. कहते हैं ना कि गुड पीपल के साथ रहोगे तो आपका थॉट प्रोसेस भी गुड रहता है. यदि आप इनोवेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी थॉट प्रोसेस इनोवेटिव डेवलप होता है. और यदि लाइक नॉर्मल लाइक किसी भी तरीके के इंसान के लाइक जैसा आपका ग्रुप होगा, जैसा आपका सर्कल होगा, वैसा आपका माइंडसेट क्रिएट होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नेटवर्किंग कैसा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रोसेस आपका कैसा है, वो दैट डिफाइंस योर pathways of your startup, whether in successful direction or failure direction. So this is very important. So I started building a good relationship, I started building my networking before establishment of my startup. Until the time website developed, तो मैं उन नेटवर्क्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सर दिस इज माय मैम, सर और मैम दिस इज द प्रोजेक्शन, कि मैं इस चीज को इस तरीके से करने की सोच रहा हूं, मैं इसको इस वे में
आगे चलने की कोशिश करने वाला हूं एंड फॉर दैट नाउ योर हेल्प नीडेड, योर नेटवर्क नीडेड, योर सपोर्ट सिस्टम नीडेड. So networking is another very important key for running successful entrepreneur organization or startup, or being a successful entrepreneur. Networking should be very good and sound. Another thing that is very important, so of course networking create hua, then रिसर्च ओरिएंटेड इंडिविजुअल, मतलब ओपन माइंडेडनेस. आपका जो एक ऑरा होना चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो ओपन माइंडेडनेस इन द सेंस ऑफ कि आप कोई भी चीज आप मार्केट को प्रेजेंट कर रहे हैं, so you need to understand ki what pros and cons people felt, and you will get a kind of suggestions. You will get a kind of feedbacks from the customer, and you need to accept those feedbacks also. So what I did in 2019, so till then all market research I did, till then all networking I did. I knew कि जो डोमेन में लेके आगे चल रहा हूँ, जो डोमेन में आगे लेके चल रहा हूँ, उसमें डेफिनेटली स्कोप बहुत था. क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी ये परेशानी झेली थी, और आज भी मैं अपने ड्यूरिंग जॉब में ये सारी चीजें देख रहा था. सो डेफिनेटली मुझे इतना पता था कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है, बट इसको प्रॉपर प्लानिंग वे में लेके जाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लान वे में लेके जाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजिक वे में लेके जाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई started pilot testing in 2019, and started that time I started with training programs as well. And in career counseling I started training programs, and started giving career counseling under banner of my own organization. That time I was not registered under that, but during pilot testing i I was very I was overwhelmed with responses from the market, responses from the end customers. एंड देन आई थॉट ऑफ कि यार इसमें हम लोग जो हमें आज तक नहीं मिला है, या फिर जो मार्केट ने नहीं दिया है, उस चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके इसको हम आगे एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं. दिस वाज द ओपन माइंडेडनेस, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर. कि आप टाइम टू टाइम, और इट वाज नॉट रिलेटेड टू ओनली पायलट टेस्टिंग. आज भी एज ओपी सर मेंशन कि लाइक time to time I used to implement a few things in my service category, or in various other things. So this thing this thing will help you to sustain into a market, into a particular market, into a particular field for longer time. क्योंकि जितना आप इनोवेटिव तरीके से, जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना ही आप आगे उस आइडिया को, इस स्टार्टअप को आप लेके जा पाएंगे, एंड यू विल able to generate a kind of revenues also. So flexibility and open mindedness must be required to be a successful entrepreneurship. And also don't be frustrated with your failures as well. Sometimes हम सोचते हैं कि यार मुझे आइडिया ही नहीं है, करना क्या है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. अरे एक बार स्टार्ट तो करो. आप जिस डोमेन में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि काम क्या क्या होते हैं, आप एक बार स्टार्ट तो करो. आइडिया अपने आप आता चला जाएगा. जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे, पायलट टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक आपको वो एक फील नहीं आएगा, वो आपको एक समझ में नहीं आएगा कि आपको और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स लाने हैं. एंड वन आई टेस्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग, पायलट टेस्टिंग, आई डिड दैट इन 2019. देन आई थॉट ऑफ कि नहीं, इसमें स्केलेबिलिटी है, इसमें ग्रोथ है इस मार्केट में, बट यस हमें उसमें फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े शार्क्स ऑलरेडी मार्केट में हैं. सो बट यस आई वाज रेडी. सो दैट वाज द being entrepreneur. यहाँ पे we need to understand, being an entrepreneur you need to be passionate about your dream, you need to be passionate about your goal, and also good in planning as well. That is very important, क्योंकि without planning आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो. आपको 10 डायरेक्शन दिखेंगे यदि आप बिना प्लानिंग के गए. अदरवाइज इफ यू विल गो विथ प्रॉपर प्लानिंग, then you will have a proper
थॉट प्रोसेस कि मुझे इसके बाद ये करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा हर चीज का। बट यदि प्लानिंग नहीं है, you can't manage anything. So you must be a very much, very good in planning the process also to run your own startup. As in say at same time आपको अपने मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, आप आपकी लाइक स्कोप ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है, आप क्या क्या चीजें आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि सी द थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन सेटअप, व्हेन यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रोडक्ट को जो आपने इंप्लीमेंट किया अपने कंपनी में इन स्टार्ट ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम, और वही आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आने वाले 50 साल 100 साल और थ्रू आउट लाइफ। नो, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप बहुत सारी कंपनीज को देखोगे कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सर्विसेज टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें मॉडिफिकेशन करते जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केट नॉलेज, बिकॉज ऑफ मार्केट डिमांड, बिकॉज ऑफ सोसाइटल डिमांड। Societal demand, societal structure keep changing in a regular time of interval. So market knowledge, planning, and passion, these are the things key role in success of your startup. Then I registered, so that was the like life achieve moment for me. Like 13th January 2020, I can termed myself as a registered entrepreneur. So my organization registered under Minister of Corporate Affairs then at 13th January 2020. But now अभी भी ऐसा नहीं था कि ना आई वॉज इन कंफर्टेबल जोन। ऑफ कोर्स फंडिंग का तो इशू रहता ही है किसी भी स्टार्टअप में, but that was not the main constraint for me because I was aware of it. Yadi I can plan properly, so I can generate a good revenue from this particular market. But real challenge came again in March 2020 when pandemic hit. 3-month older company, badly hit by pandemic. So now here is again a new lesson for me. Challenges आते रहेंगे आपके पास, बट जो भी प्रॉब्लम्स आते रहेंगे आपके पास, बट इफ यू कंसीडर दोज मोमेंट्स, दोज प्रॉब्लम्स एज अ प्रॉब्लम, यू कांट overcome those situations. But if you treat those problems as a challenge, then you have a lots of idea to deal with it. आप फिर उसके लिए ब्रेन स्टॉर्म करते हो। सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आता है, उसको आप प्रॉब्लम मत समझो। बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ इंडिविजुअल, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या नहीं हो, ये सक्सेस टुवर्ड्स द लाइफ की भी बात मैं करूं तो यू कांट ट्रीट इट एज अ प्रॉब्लम, कंसीडर इट एज अ चैलेंज। और जब आप उसको चैलेंज कंसीडर करते हो ना, फिर उसको ओवरकम करने के लिए आप और डबल मेहनत से आप उस पर वर्क करते हो, डबल मेहनत, एंड दैट विल enhance your risk taking ability, that will enhance your creativity part also, creativity skills, क्योंकि entrepreneur can't be separated by creativity and risk taking ability. आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। यू कांट प्ले इन सिक्योर्ड, यू कांट प्ले सिक्योर्ड गेम, यू कांट प्ले सेफ गेम, बिकॉज वी डोंट हैव अ आइडिया कि जब हम स्टार्ट कर रहे होते तो इस महीने कितने का टर्नओवर आएगा और साइमल्टेनियसली इस महीने भी इतने का ही टर्नओवर आएगा। क्योंकि पेंडेमिक ने ये हमें सिखाया कि किस तरीके से इन सिचुएशंस को डील करना है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन पेंडेमिक हिट, I was completely shocked कि how I will get a kind of business, अब क्या होगा, because that time I was also not very much aware of those online platform and various other sources कि how I can promote myself, how I need to proceed further. But again I thought of कि कुछ तो करना पड़ेगा, करते हैं। तो जब तक आपका ये एक जो जिसको हम लोग हिंदी में जिद बोलते हैं, राइट, डेडिकेशन इसको हम लोग कह सकते हैं, जब तक ये
ये थॉट प्रोसेस आपके माइंड में नहीं रहेगा, तब तक बी you can't be successful in this particular domain. You need to fight with various challenges. You need to overcome with it. You need to understand that new market also. You can't go with the trend. You need to think a little bit out of the box. आपको अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे, आप इन डाइवर्स सिचुएशंस में बिल्कुल आप रन नहीं कर सकते. देन आई थॉट ऑफ, एंड ऑल्सो वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका कोई भी स्टार्टअप, इट दैट मस्ट बी कस्टमर सेंट्रिक. You need to understand their requirement time to time, and that I focused since long when I was into the planning phase as well. That helped me a lot during this particular pandemic. So when I started my venture, pandemic hit, then I continuously discuss with my acquired clients, acquired trainees, acquired customers ki what you thought of. एक काइंड ऑफ मार्केट सर्वे आप उसको कह सकते हैं कि इसमें और हम क्या एड ऑन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टफ टाइम, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मार्केट में मनी मोबिलाइजेशन था वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुका था उस टाइम पे. पीपल स्केयर्ड कि जॉब चली जाए ना जाए, या फिर पैसा इन्वेस्ट करूं कहीं, या फिर पैसा कहीं लगाऊं या ना लगाऊं. So that was the big challenge for any startup, and I have seen कि many startups closed during that particular pandemic. But my only thought was, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसको stop नहीं करना, because this was my dream project, this was my dream thing कि नहीं यार इसको आगे लेके चला है. मेरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और कभी भी when you are an entrepreneur, when you have a planning to start your own startup, आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, सोशल एम्पावरमेंट आपके बिजनेस से क्या जनरेट हो रहा है, दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर यू फॉर लॉन्गर रन. आई थॉट कि जितने लोगों को हम ट्रेन करेंगे, उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जोड़ेंगे, they should not treated as a client, they should not treated as a customer, they should be treated as a family. Because that was the time, pandemic जब आया था उस टाइम पे इवन many people blanked with the mind कि these challenges को कैसे overcome करना है. एंड इन सब चीजों के लिए आपको एक प्रॉपर नेटवर्क बिल्ड करना था, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. कि जब जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, उनको डोंट ट्रीट देम एज अ क्लाइंट, ट्रीट देम एज अ फैमिली पर्सन. एंड even after completion of our monetary our professional relationship, like ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा हुआ या काउंसलिंग प्रोग्राम्स हुए, खत्म होने के बाद भी हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने रियल लाइफ के चैलेंजेस या प्रोफेशनल चैलेंजेस को आप डील कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो. सो आई क्रिएटेड अ काइंड ऑफ एलुमनाई प्लेटफॉर्म, एंड they do discuss their real challenges. We also give a lots of solutions. We also create a kind of daily routine discussion points कि उसमें हम लोग जो रियल चैलेंजेस जो हो रहे हैं उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, सो दैट they also delighted with these particular activities by my startup. And surprisingly, during that particular pandemic, like I got lots of referrals. I got business through referrals. So like जो मेरा एक चैलेंज था, जो मेरा एक वो प्रॉब्लम था कि अब इस पेंडेमिक को हम कैसे ये डील करेंगे एंड ऑल, सो मेरा 90% जो एक हम कहते हैं ना बोझ, वो हल्का हो गया कि एंड आई डिड वेरी वेल. एंड during that pandemic only I developed my own software as well, invested so many amount during that particular thing, just because of those plannings and those process only. So it is not like कि आप कोई भी स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो तो हमारे पास ये बड़ा बजट होना चाहिए, बड़ी चीजें होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए. हर एक बिजनेस का अपना अपना एक डोमेन होता है.
So what kind of domain you are opting, what field you are opting, what product you are opting, accordingly you can decide, accordingly you can check कि उसमें किस तरीके से आप फिट कर सकते हो, क्या इनिशियल स्टेप क्या होने चाहिए, कितने इनिशियल फंडिंग चाहिए होते हैं, ये सारी चीजों को आप ओवरकम कर सकते हो. एंड वन लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग. इट्स नॉट लाइक कि आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे कंप्लीटेड देयर डिग्री, दे कंप्लीटेड देयर थिंग एंड देन दैट्स इट, मुझे अब कुछ नहीं सीखना है. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई कंप्लीटेड माय मैनेजमेंट, I was in job. I I have seen the societal structure, societal challenges as well. एंड उसको डील करना था मुझे, उसको एज अ चैलेंज मैंने उसको लिया कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. उसके लिए मुझे लगा कि नहीं, आई नीड टू एंटर इनटू साइकोलॉजी इंडस्ट्री. सो ड्यूरिंग माई जॉब इन द सेंस कि जॉब को कंटिन्यू रखने के साथ साथ आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, आई कंप्लीटेड माई PGDGC. नाउ करेंटली आई एम डूइंग माई PhD ऑल्सो एंड माई वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार कोई भी चीज सीख लिया या फिर कोई उसके अपग्रेड होने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल है आपको, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन यू कि मार्केट कीप्स चेंजिंग, ट्रेंड कीप्स चेंजिंग. आपको पेंडेमिक जैसे आपको लाइफ टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, बट दोज नॉलेज अपग्रेडेशन प्रोसेस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मार्केट, कि मार्केट को चाहिए क्या. And those learning process only will help you to survive in this particular tough market, survive into this particular complex market, I can say, and highly competitive market. So this is very important, and during these 2 years I successfully built a family of 250 people, successfully build 250 people of CUC family, craft your career family. Among them, I think 20 or 25 abroad family individuals. So see, the thing is that whatever you are doing in this particular market or for yourself, being an entrepreneur, you need to have a proper planning. And that's the reason currently we have seen lots of entrepreneurship development training programs came into the market already. Even OP sir and NCIDE team also conducted one workshop that was seed, and fortunate enough I was the part of that particular thing, and I learned lots of things that particular workshop as well. Instead of I already had a startup. So it's not like कि आपके पास स्टार्टअप हो ना हो या फिर आप बडिंग एंटरप्रेन्योर हो, लर्निंग आपको लेते रहना चाहिए. कोई बात नहीं, आप यदि लाख रुपए अर्न करने की सोच रहे हो तो 10,000 खर्च करने में कुछ नहीं जाता है, बट यू नीड टू हैव अपग्रेड योर सेल्फ. एंड जब तक आप उसमें उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, सक्सेस कांट कम इजिली. दिस इज ऑल्सो अनदर लेवल ऑफ ट्रूथ. सक्सेस कांट कम्स इजिली. उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता ही है, उसके लिए आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि आपको खाना परोस के दे दिया गया, बस आपको सक्सेस खाना है, आपको इजिली फीड करना है. नो, नॉट एट ऑल. तो जो मुझे लगा, ये सब चीजें तो बाद की प्रोसेस रहती हैं, सारी चीजें हमने जो डिस्कस की, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट. इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्टार्ट करने की. हमारे अंदर वो गट्स ही नहीं आता है कि हम कब कैसे स्टार्ट करें. क्या मैं स्टार्ट करूं, क्या मैं यदि कोई भी चीज स्टार्ट करूंगा तो क्या जो मुझे सैलरी में 30,000 हर महीने मिल रहे होते हैं, क्या वो स्टार्टअप में भी वो 30,000 मिलेगा हर महीने या नहीं. क्योंकि आई टॉक सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, सो मेनी ऑफ माई कलीग्स और सम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और सम दोज आर प्लानिंग फॉर दैट. सो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर मैं यदि ये स्टार्ट करूंगा तो इसमें अर्निंग मेरे को पर महीने कितने हो जाएगी. बीइंग एंटरप्रेन्योर आप पर महीने की अर्निंग की बात कर रहे हैं, so I don't think so this mindset will work as a entrepreneur. You need to think longer run कि आप यदि प्रॉपर, क्योंकि मार्केट कीप्स चेंजिंग, तो यदि इस महीने आपका ये टर्नओवर हो रहा है तो अगले महीने में भी इट विल बी फ्लक्चुएटेड, and that I experienced also. So it can't be
uh, it can't be consistent, but you need to have a patience also. You need to have a that kind of risk taking ability. तभी आप उस चीज को आप 50,000 को आप 10 लाख रुपए तक लेके जा सकते हो। अदरवाइज आप वो सिक्योरिटी ही ढूंढते रह जाओगे, फिर आप 30,000 से ज्यादा 40,000 तक 50,000 तक आगे पहुंच सकते हो। अदरवाइज बीइंग एंटरप्रेन्योर यू कैन अर्न lakhs crores and all, but for that you need to start. You need to leave your those secured mindset. Let's do it, then we will check कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिर उसको हम लोग मिलके और उसको एक्सपर्ट के थ्रू, उसको कंसल्टेंट्स के थ्रू हम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसको ओवरकम करेंगे। बट फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट, वी नीड टू टेक अ डिसीजन। This is what the main thing. Decision making skill is always a difference between decision maker and non decision maker. So over to you, Momita ma'am. Chandan, I would like to congratulate you on that extremely energetic and detailed talk today. मैं एक मेरे अंदर एक बिलीफ हुआ है कि your talk today will launch 100 startups. So thank you very much. And now I would request our participants who are here to give their observations, comments. And before that, I would like to invite Dr. O.P. Sharma for his comments. Chandan, excellent sharing of your story with lots of examples and your experienced based how you have experienced. And I hope it will be motivating all those who are watching you live and also when they will be watching your video recorded. Thank you very much and wish you all the best for your entire journey and hope that you will be a very big entrepreneur in your life. Thank you. I will say only these words. Let us listen to our participants and students also. Dr. Nayak, would you like to say something? Namaskar, Sarma Saab. Namaskar, everybody. Congratulations, Chandan. I was very attentively listening to what you were saying. I was telling my colleagues sitting in front of me कि देखो हमारे स्टूडेंट कहाँ तक पहुंच गए हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जैसे कि शर्मा साहब बोल रहे थे अभी, you can be the ideal, the role model for the IGNOU innovators. और I can see a very bright future for you. आपके आगे आवाज कैसे जा रही है मुझे पता नहीं, कल लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत था मेरा। इफ यू आर एबल टू हियर मी। सर प्रॉपर आ रही है, सर प्रॉपर आ रही है। ठीक है, तो God bless you, and I can see a very bright future for you. You are going to be very successful entrepreneur, क्योंकि जितना चैलेंजेस के बारे में आपने बात किया, जैसे उसको ओवरकम आपने किया। क्योंकि देखिए, there is a very beautiful line in English, when the going gets tough, the tough get going. जब जिंदगी में आपका मुश्किलातें बढ़ जाते हैं, when the difficulties and the problems in life they keep on increasing, only it is the people with resilience and people who are hardworking and people with grit and guts, they go ahead. बाकी सब पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कोरोना टाइम पे आपने उसको झेल के आगे भी उसको बढ़ाया। सो गॉड ब्लेस यू। आई कैन सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर यू एंड यू कैन बी ए। मैं शर्मा साहब को अनुरोध करूंगा कि बार बार बच्चों के सामने चंदन जी को बुलाया जाए। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। आई विल कॉल you one day for my students in Patna. Thank you very much. Sir, that will be great. And of course, see, sir, why I am relating these things, because even I am also based from Bihar itself, right? So the kind of societal structure we have seen during my time. अभी सुबह में भी एक मैं इंग्लिश में एक स्टोरी देख रहा था, इंग्लिश में एक पंक्ति लाइक लाइन था, लाइक hard time creates strong people, strong people creates easy times, easy time creates weak people, and weak people creates again hard time. So this is what the entire journey of individual's life. And if
like definitely हम लोग की जो परवरिश हुई है, we have seen lots of hard times, lots of tough times, and those things definitely created lots of ideas, and kind of mindset, given like developed by myself throughout the situation what I handled and all. So yeah. थैंक यू डॉक्टर नायक। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कुछ करना स्टार्टअप्स का, तो मैं उनको भी इनवाइट करूंगी वन बाय वन, इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग, और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं या कोई कमेंट देना चाहते हैं। उनसे पहले मैं डॉक्टर असद निज़ाम जी हैं, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग डॉक्टर निज़ाम? Okay, I will invite Dr. Nizam after this. Dr. Ranjita Panda, would you like to say anything? Yeah, thank you, Dr. Momita. Thank you so much for inviting. Really, it's a very excellent presentation, Chandan ji. Really, और आप रामानुजम कॉलेज से भी हैं ना? Just नहीं नहीं ना, just I left that time the meeting due to some connectivity issue, and wish you all the best. Just I would like to say one sentence for you. We are so proud of for you, really, and you are the inspiration source of all the IGNOU students, and for us also we have to think how to motivate our students, and in headquarters also we are planning to do something, and we'll call you, and really thank you so much and all the best. थैंक यू डॉक्टर रंजीता। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? Dr. Nizam says, thank you for inviting. I just want to listen. So thank you, Dr. Nizam. And anybody else, और किसी को कुछ पूछना है? So if we do not have any other comments, it is time to end this session today. I thank our expert, Mr. Chandan Kumar, for sparing his valuable time to give this wonderful talk. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members, and academics of IGNOU for attending today's session. I thank Mr. Rajesh Sharma, Head of the Public Information Unit, for providing NCID with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of the session with utmost dedication. I thank Dr. Sharma, Director NCID, and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar for extending his assistance in the smooth conduct of this program. This brings us to the end of today's session. Hope to see you next week. Till then, namaste. Thank you. Thank you.